Good morning, students. I'm your teacher, Hemlata Yadav, and I'm explaining you the chapter motion. Life is a full circle, widening until it joins the circle. Motions of the infinite. So, circular motion, you know that in the circular motion, the wherever we start, we end with the same position. What is motion then? Motion is a change of position of a body with time. Motion can be described in terms of distance moved or the displacement. So whenever a body is changing its position with time, we say that the body is in motion. Concept is, in physics, motion is a change in position of an object with respect to time. Motion is typically described in terms of displacement, distance, velocity, acceleration, time, and speed. Motion is expressed in these terms. Motion of a body is observed by attaching a frame of reference to an observer and measuring the changing position of the body relative to that frame. So we have set a reference point with respect to the observer, that where the object was first at the from the point of view of observer, and a time frame is also added to it, and in the time now the object has moved from where to and has come to which place. Final position is what is the final position. Now types of motion, we can see there are many types of motion: random motions, rectilinear motions, translational motions, curvilinear, circular. These are translational motions. So these motion in a straight line is rectilinear. Motion in a curve is a curvilinear. Motion in a circular orbit is a circular. And object rotates on its own axis, rotational motion. And to and fro from its mean position is oscillatory motion, like pendulum motion. Distance is it's the actual length of the path traveled by any body. कि कोई बॉडी कितना एक्चुअल पाथ कवर करती है उसी को डिस्टेंस कहते हैं. स्टार्टिंग पॉइंट ए, और उसने स्टार्टिंग पॉइंट ए से टोटल डिस्टेंस कवर किया 1 लैप में 400 मीटर का जो ट्रैक है. फॉर एग्जांपल कोई रनिंग कर रहा है 400 मीटर के ट्रैक में, सर्कुलर ट्रैक में, तो स्टार्टिंग पॉइंट उसकी स्टार्ट होगी तो 400 मीटर का सर्कुलर ट्रैक कवर करेगा, तो ये डिस्टेंस मूव हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट क्या है? It is the length of the shortest path traveled by a body from initial to the final position. Shortest path travel करना किसी बॉडी का इनिशियल से फाइनल पोजीशन में, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट. तो अगर ये रन करके आता है और ये यहीं आकर हो जाता है, इसकी इनिशियल और फाइनल पॉइंट स्टार्टिंग सेम है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट इज 0 in the 1 lap. Speed. What is speed? Speed is a body is a distance traveled by the body in a unit time. एक यूनिट टाइम में, सिंगल मिनट में या सिंगल सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है कोई बॉडी, वो उसकी स्पीड होती है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. If a body travels a distance s in the time t, then its speed v is equal to s by t. कोई अगर बॉडी ट्रैवल करती है इस डिस्टेंस को टाइम टी में, तो उसकी जो स्पीड हो जाती है हो जाएगी एस बाई टी. का ऐसा यूनिट ऑफ द स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, और उसको लिखने का तरीका भी दे रखा है मीटर, और पर का साइन हटाते हैं, अगर डिवीजन का साइन हटाते हैं तो हम एस की पावर -1. सो इट इज रिटन हियर the unit of the speed is given. The speed is a scalar quantity क्योंकि इसमें कोई कह सकते हैं डायरेक्शन नहीं होती. वेलोसिटी, अब हम वेलोसिटी की बात अगर करें तो रेट ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज मीनिंगफुल इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन अलोंग विद द स्पीड. तो रेट मोशन का किसी बॉडी का मीनिंगफुल तभी होता है अगर हम उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करें उसकी स्पीड के साथ. The quantity of which specify both direction and the motion, direction of motion को भी जो specify करे
वो और स्पीड को भी स्पेसिफाई करे, उस क्वांटिटी को वेलोसिटी कहते हैं. So the quantity which is having speed with the direction is known as velocity. Velocity of a object body is the displacement of the body per unit time. तो velocity displacement के फॉर्मूले से निकलती है. Displacement per unit time is the velocity. Since velocity has both magnitude and the direction, it is a vector quantity. Acceleration, the quantity which specify changes in the velocity is acceleration. Velocity में टाइम के साथ साथ क्या चेंज हो रहे हैं वो क्या कहलाएगा, acceleration कहलाएगा. The quantity which specifies changes in velocity per unit time. Acceleration is the change in velocity of a body per unit time or the rate of change of velocity per unit time. V minus U by T. SI unit of acceleration is meter per second square. Plotting points. We already know how to plot a point on a graph. So let us recall them. Suppose you want to plot 3, 4. So x-axis is 3 and y-axis is 4. In the similar way, we can plot many points on the graph. A graph is a pictorial representation of observation. It consists of variables, and one is independent variable and other is independent. One is independent and other is dependent. Independent variable is taken on the x-axis. So x-axis पे हम independent variable लेते हैं जो change नहीं होंगे, and dependent variables is taken on the y-axis. There are many types of graphs in physics: distance time graphs, displacement time graphs, velocity time graph, acceleration time graph. Distance time graph, change of the position of the body with time can be represented on the distance time graph. In this graph, distance taken on the y-axis and the time is taken on the x-axis. So कितना distance कितने time में travel कर रहा है, तो time हम x-axis पे ले लेंगे क्योंकि time हमारा fixed है और distance हम अलग अलग travel कर सकते हैं किसी time पर. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म स्पीड का अगर ग्राफ आएगा तो वो कैसा आएगा, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी. दिस इज बिकॉज यूनिफॉर्म स्पीड है बॉडी की, travel equal distance in equal interval of time. We can determine the speed of the body from the distance time graph. हमें distance time graph पढ़ते क्यों है, क्योंकि हम distance time graph से speed निकाल सकते हैं body की. Because we can find the speed of the body, we can determine the speed of the body by the distance time graph. They are used to find speed or velocity of the body. Slope of it gives speed of the body. There are 3 types of distance time graph. If the distance time graph with respect to time if it has the same distance, तो ये किस तरह का ग्राफ है, ये रेस्ट पे, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो एक पोजीशन पे एक डिस्टेंस पे 3 किलोमीटर पे रखी हुई है, तो 3 किलोमीटर पे ही वो है, उसने अपना डिस्टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है. तो दैट इज when the body is rest, when the body is at rest. It is showing the first graph when the body is at rest. यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है when the body is at the rest, which is a straight line parallel to time axis. Time axis से parallel graph आता है. When the body is moving uniform speed, जब uniform speed से कोई body चल रही है, then the body is moving with uniform speed. Straight line make an angle with the time axis. Slope of this line given by y2 minus y1 upon x2 minus x1, which is equal to the speed. So this is the uniform motion graph, straight line. When the body is moving with non-uniform speed, the body covers an equal distance in equal interval of time. So curve type is observed in the non-uniform speed and non-uniform motion. These curves are parabolas. The greater the angle, the greater the slope, and the greater is the speed. Displacement time graph. It's a vector quantity and its slope gives velocity. So displacement time graph में vector quantity ये होती है और इसका slope velocity देता है. Distance time graph आपको speed देगा क्योंकि distance upon time is speed.
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी देगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। टी टाइप के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होंगे, रेस्ट पे सेम रहेगा, स्पीड और टाइम के बीच में ये बनेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगी, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ए एंड बी, जहां पर Q1 इज ग्रेटर देन Q2, एंगल Q1 का ज्यादा है Q2 से, तो वेलोसिटी ए की ज्यादा होगी वेलोसिटी बी से। तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो Q1 Q2 देकर आपको ए और बी दो ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे, स्पीड वेलोसिटी बता रखी है, यहाँ पर बी ए बता रखी है, ए की स्ट्रेट लाइन ऊपर, तो जिसका एंगल ज्यादा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। बॉडी मूविंग विद वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीजेस वेलोसिटी डिक्रीजेस। जब कर्व ऊपर की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है टाइम के साथ साथ, और जब कर्व इस तरह से ऐसे जा रहा है तो ये वेलोसिटी कम होती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Velocity time graph, if for the body moving in a straight line without changing its direction, velocity of the body become equal to its speed. Slope of the velocity time graph with the acceleration of the body. The area under this graph gives the value of the distance traveled. There are three different cases of this graph. Case 1, if the body is moving with constant speed, then the slope is equal to 0. Acceleration is meter per second square. Constant speed, if the body moves with a constant velocity of speed, the line is parallel to the time axis and the slope of acceleration will be 0. When the body is moving with uniform changing speed, if the speed increases uniformly, the speed decreases uniformly. इंक्रीज तो ऊपर की तरफ अबव रहेगा, ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो लोअर डायरेक्शन में आएगा। द स्पीड इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। Case third, non-uniform changing speed. The speed increasing non-uniformly. The graph is curve moving upward. ऊपर की तरफ जाता जाएगा। Speed is decreasing non-uniformly. तो कर्व ऐसे नीचे की तरफ आता है। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम के बीच में बनेगा, रेस्ट में स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल रहेगा टाइम एक्सिस से। अब इक्वेशन ऑफ मोशन है जो ग्राफिकल मेथड से समझाते हैं। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जहां पर u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन की टाइम एंड s डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है। सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस की जगह हम 2πr लिख सकते हैं, क्योंकि सर्कल के पाथ में ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो 2πr डिस्टेंस, जहां पर r रेडियस है सर्कल का, टाइम के हिसाब से वो 2πr डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। Thanks for watching. So this was all discussion about the some graphs, discussion about the three equations of motion. I hope you have understood the concept, and we have also discussed the velocity, displacement, and acceleration, their formulas, their units we have discussed. So I hope this is clear to you, and for more such videos, you can like the video and subscribe my channel.